Good morning, class. I am Tejinder Singh Sabarwal, founder and chairman of ICE College of Hotel Management. Today, we will study 5 important concepts related to pricing, demand, and hotel revenue. Let's begin. 71. Perishable. Students, the first term is perishable. In hotels, rooms are considered perishable inventory. This means if a room is not sold for that night, it can never be sold again. You cannot store today's empty room for tomorrow. होटलों में कमरे नाशवान यानी ख़राब होने वाली चीज़ की तरह माने जाते हैं। अगर कोई कमरा एक रात नहीं बिकता तो वह मौका हमेशा के लिए चला जाता है। आज का खाली कमरा कल के लिए बचाकर नहीं रखा जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अ रूम एम्प्टी ऑन 10th August is a lost opportunity. This perishability is why hotels focus heavily on demand forecasting and pricing strategies. 72. Pickup. The next term is pickup. Pickup refers to the number of rooms booked over a specific period of time. It tells the hotel how quickly rooms are selling for a future date. पिकअप का मतलब है किसी खास समय में कितने कमरे बुक हुए। इससे होटल को पता चलता है कि आने वाले दिनों की बुकिंग कितनी तेजी से बढ़ रही है। Example, if on Monday 20 rooms were booked for Diwali weekend, the pickup is 20 rooms. If the next day another 15 rooms get booked, the pickup becomes 35. Pickup trends help hotels adjust prices, availability, and marketing strategies. 73. Prestige. Pricing. Next is prestige pricing. Prestige pricing means setting high prices to create an image of luxury, exclusivity, and premium value. प्रेस्टीज प्राइसिंग का मतलब है कमरे की कीमतें जानबूझकर ज़्यादा रखना ताकि होटल का एक लग्जरी और प्रीमियम छवि बने। Hotels use prestige pricing when they want to position themselves as luxury. They offer superior service. They have a strong brand name. Guests associate high price with high quality. Example, luxury 5-star hotels use prestige pricing to maintain an elite image and attract premium guests. 74. Price elasticity of demand. Now let's understand price elasticity of demand. This concept measures how sensitive guest demand is to changes in price. If demand changes a lot when price changes, demand is elastic. If demand barely changes when price changes, demand is inelastic. इस अवधारणा से पता चलता है कि कीमत बदलने पर मेहमानों की मांग कितनी बदलती है। अगर कीमत बदलते ही मांग बहुत बदल जाए तो उसे इलास्टिक डिमांड कहते हैं। अगर कीमत बदलने पर मांग में कोई ख़ास फ़र्क न पड़े तो उसे इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं। होटल्स स्टडी इलास्टिसिटी टू नो when to increase rates, when to offer discounts, how price affects different guest segments. This helps in smarter pricing decisions. 75. Price elasticity of supply. And finally, price elasticity of supply. This measures how much the hotel can increase or decrease room supply when prices change. In hotels, supply is usually fixed number of rooms. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब है कीमत बदलने पर होटल कमरे की उपलब्धता कितनी बढ़ा या घटा सकता है। होटलों में कमरे की संख्या तय होती है, इसीलिए सप्लाई ज़्यादा बदल नहीं सकती। बट विद इन दैट लिमिट होटल्स एडजस्ट सप्लाई बाय opening or closing room floors, selling or blocking room categories, adding extra beds, using day use rooms, releasing held inventory. When prices rise during high demand, hotels try to increase supply as much as possible. Closing. Thank you for listening. Thanks from ICE College of Hotel Management.